नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले फर्जी और बेबुनियाद खबर, वो खबरें जिनका सत्यता से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, बस खबरों को झूठ के आधार पर सनसनी फैलाना। इसी फर्जी खबर पर बात करने के लिए आपके सामने आए। फर्जी खबर पर कांग्रेस पार्टी ने एक खबर पर आपत्ति दर्ज कराई है। एक टीवी न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई कि कांग्रेस एग्रीज ऑन वन फैमिली वन टिकट। ये आधी अधूरी खबरों का मायाजाल। इस पर कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग ने कहा और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, डियर एनडीटीवी, वी ऑल एक्सपेक्ट बेटर जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स फ्रॉम यू, रिक्वेस्ट यू टू नॉट मेक unfounded stories and pattern. Your baseless and wholly incorrect story is being mischievously used as a maligning tool by a scared BJP and its leaders. ये ट्वीट किया कम्युनिकेशन विभाग ने। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवास इसी फर्जी खबर पर लिखते हैं कि हिंदी समझने में अगर एनडीटीवी के कुछ साथियों को तकलीफ है तो एक ट्रांसलेटर हम मुहैया करा सकते हैं, या फिर इस मिसलीडिंग खबर के पीछे कोई और निजी मजबूरी, तो इस देश में पत्रकारिता का भगवान ही मालिक है। पूरा बयान साझा कर रहा हूं। और उन्होंने बयान किसका साझा किया? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस महासचिव हैं श्री अजय माकन, उनका वक्तव्य जो है वो साझा किया गया। क्या है वक्तव्य, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये भी हम लोगों के चर्चा में आया है। एक वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है, वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। उसके अलावा कूलिंग पीरियड और जो है अपनी जो पोस्ट के ऊपर है उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट के ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा ना रहे और अगर उसको 5 वर्ष से ज्यादा रहना है तो कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड उसको रहे और फिर उसके बाद में वो वापस उस पद के ऊपर आए। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने आज चिंतन शिविर में कहा कि अब तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी जो बार बार दोहराते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इससे उनका असली चेहरा निकलकर सामने आ गया है। It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. It means threatening and intimidating political opponents, maligning their reputation, jailing them on flimsy pretext, misusing investigative agencies against them. It means eroding the independence and professionalism of all institutions of democracy. It means the wholesale reinvention of history, the constant denigration of our leaders, especially Jawaharlal Nehru, and the systematic moves to distort
deny, and destroy their contributions, their achievements, and their sacrifices. It means glorifying the killers of Mahatma Gandhi and their ideologues. It means the blatant undermining of the principles and provisions of our nation's constitution, of its pillars of justice, liberty, equality, fraternity, and secularism. It means turning a blind eye to continued atrocities across the country on weaker sections, especially Dalits, Adivasis, and women. It means using fear to make the bureaucracy, to make corporate India, to make civil society and sections of the media fall in line. It means more empty slogans, diversionary tactics, and utter silence on the part of an ever so eloquent Prime Minister when the healing touch is most needed. श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आज न केवल लंबे समय से शोषित हमारे संवैधानिक मूल्य खतरे में हैं, बल्कि नफरत और कलह की जो आग भड़काई जा रही है, उस आग ने कई लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। इन लपटों के गंभीर सामाजिक विकट परिणाम अशांति और हिंसा के रूप में दिखते हैं। The vast majority of Indians want to live in an atmosphere of peace, of amity and harmony. The BJP, its cohorts and surrogates want to keep people in a state of perpetual frenzy and conflict. They constantly provoke, instigate, and inflame. We have to combat this growing virus or divisiveness that is being maliciously and mischievously spread. This we must do at all costs. It is imperative to sustain high economic growth, to provide adequate employment opportunities for the youth. We must generate revenues needed for the welfare programs and improve the standard of living. But the worsening environment on social illiberalism and bigotry shakes the very foundation of economic growth. श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से अर्थव्यवस्था लगातार मंदी के दौर से ग्रसित है। भारी तादाद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पंगु हो गए, बेरोजगारी खतरनाक तरीके से बढ़ गई और यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। Whatever support the central government has been able to provide in the past 2 years to people has been on account of most of the UPA programs, and to name just two of them, the Mahatma Gandhi Narega, the employment scheme, and the national food security. The sheer tenacity of farmers and their organization compelled the Modi government to repeal the 3 black laws. The Congress party stood by them steadfastly throughout their long struggle, both within Parliament and outside. But the promises made by the Prime Minister to the farmers when they withdrew their agitation have yet to be fulfilled. Meanwhile, it looks as if procurement of wheat this year will fall steeply, threatening the very foundations of our national security, food security program. Prices of essential items of mass communication, of mass consumption, like cooking gas, cooking oil, pulses,
vegetables, fertilizers, petrol, and diesel continue their upward march, placing an intolerable burden on crores of families. Public sector companies built up with such careful planning with economic and social objectives in mind by earlier Congress government are now being privatized with a vengeance and to a chosen few. This will have disastrous consequences. Among other things, this means that one avenue for assured employment for scheduled castes and scheduled tribe will get totally closed. चिंतन शिविर में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। चिंतन शिविर के हर खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।